तो भाई नासा वाले बड़े खतरनाक है, ऐसी वाली वीडियोस तुम लोगों ने बहुत देखी होंगी। और क्योंकि जब मैंने इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की वो जो बड़ी जो एक उपलब्धि है उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि भाई अपने ब्लैक होल की जो इमेज है, मिल्की वे के ब्लैक होल की जो इमेज है वो कैप्चर की गई है। अब कैप्चर की गई है, जनरेट की गई है, काफी अलग अलग इस पे बातचीत हो सकती है, तो सारी बातें जानेंगे। और आज आप लोगों के लिए मैं खास लेकर आया हूँ ऐसे शख्स को जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप में इस पूरे प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं, और इमेज जो आई है उसके बारे में आज हमें बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो डॉक्टर कौशिक आज हमारे साथ हैं, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हैं, और काफी सारी बातें जो है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप और ब्लैक होल की इमेज के बारे में हम लोगों को बताने वाले हैं। तो डॉक्टर कौशिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और कैसे हैं आप? बढ़िया है। um, my Hindi isn't that good, so थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्सचर करके बात करूंगा। नो Hopefully प्रॉब्लम, that's नो okay. प्रॉब्लम, नो uh, प्रॉब्लम। हाँ, तो बढ़िया चल रहा है। हाउ वाज द कॉन्फ्रेंस ऑन 12th में? हाउ वाज दैट फीलिंग फॉर यू? That was new. So बड़ा बड़ा रिजल्ट्स मतलब ऐसे लाइगो एक्सेट्रा ये सब चीज पहले भी देखे कि दूर से एज पार्ट ऑफ द ऑडियंस, लाइक बड़े स्क्रीन में लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं। पर being part of the audience in that room, being part of a press conference, that was a new feeling, I would say. Um, दैट वाज लाइक अ ड्रीम। yeah, it felt like a dream. टाइम बहुत जल्दी पास किया था, तो एटलीस्ट ऑन 12th में सुबह से स्टार्ट किए थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देके फिर पैनल डिस्कशन एक था, फिर एक और पैनल डिस्कशन था, और फिर रात को छोटा मतलब एक पार्टी था। तो yeah, the day just went like that. काफी 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 मजा हुआ उस दिन। सो लोगों ने फोन कर करके पूछा कि भाई ये क्या हुआ है, ये आप क्या इसी प्रोजेक्ट में हुए, ऐसे करके फोन करके पूछा? मैसेज तो आया था, फोन फॉर्चुनेटली आया नहीं था। वैसे भी बैकग्राउंड थोड़ा नॉइजी था, तो अच्छा ही हुआ आई गेस। पर हाँ, काफी मतलब रिलेटिव से तो मैसेज आए आए, दोस्त लोग से भी। अम, ये क्या बोले, हाँ, एक और चीज हुआ था। कोलकाता में न्यूज़पेपर में पिक्चर आया था मेरा, ये ब्लैक होल ये लेके, तो दैट वाज also a pleasant surprise. And actually they tried to contact me but couldn't find my number or something, and they contacted my dad. And yeah, he gave them as much details as he could, which was also pretty funny. पिताजी तो मतलब एकदम खुश हो गए होंगे कि मतलब यार न्यूज़पेपर वाले कॉल किए। सो हाँ, नाउ वो लेट्स खुश तो थे। लेट्स कम टू द ब्लैक होल इमेज पार्ट, जिसके बारे में मतलब इतना ज्यादा बातें चल रही हैं पिछले 2 हफ्तों से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट, or what was your work in the project, and how you coordinated, how was you gave the inputs in the project? Mm-hmm. So I think officially the Event Horizon Telescope collaboration started in 2017, though some of the like earlier members were there like from the start, building up the instrumentation required to get the Event Horizon Telescope project running. And I personally joined in 2018, late 2018, and my so the way I contributed was so I do theory work, which means that this you are looking at you're trying to look at the picture of a black hole, but trying to understand what
exactly you're seeing and trying to get, let's say, properties uh, of that system, or what the picture that we are seeing over there, what is that? You need to do some sort of modeling work using some basic physics. Well, I say basic, but it's more it's more complicated than that. um, right. So and basically I do like numerical models of black holes and the gas which is surrounding them, like what happens to gas or fluids like around black holes, and then trying to see like for this setup what do we see, like how does the black hole look for this setup, for that setup, etc. um so I help, like, you know that the EHT like collaboration did like 6 papers, I think, um, for the M87, the first black hole picture, um, the first black hole 2019. whose picture was published. Yes, तो 2019 में जो आया था, तो उस टीम में मैं ये न्यू ब्लैक होल मॉडल्स कंट्रीब्यूट किया था। और सिमिलरली फॉर अभी जो पिक्चर है सजे स्टार का, उसमें भी I contributed a lot of models. I helped coordinate one of the जो छोटा working groups होता है under the theory working group, and yeah, like it was, I wrote a bit of the paper as well. But yeah, that's most of it. Was like a really joint coordinated effort from a really large bunch of people. अच्छा, a lot of people think कि ये एक रात में जैसे फोटो खींचा और बस अपलोड कर दिया इंस्टाग्राम पे जैसे हम लोग करते हैं। lot of people are taking it like that कि ये खींचा और बस Mhm. डाल दिया। So please tell us about the amount of research and amount of time that you guys have taken कि डेटा जो है उसको प्रोसेस करने में, उसकी मॉडलिंग करने में, जैसा कि आपने बताया कि आप और मॉडल्स भी बनाते हैं ब्लैक होल्स के, वो सब काम करने में कितना टाइम गया। और ब्लैक होल की जो इमेजेस हैं वो एक तो 2019 में M87 की खींची गई थी और अभी अपने सेजिटेरियस की खींची गई है। सो ये जो टाइम का गैप था ये क्यों आया, और Mhm. इसके बीच में मतलब ऐसा क्या चल रहा था कि हमने उस ब्लैक होल की इमेज जो है वो ले ली, बट हमारे वाले ब्लैक होल की इमेज के लिए हमको टाइम लगा। Right. Okay. So first काफी वो सारे सवाल मैंने एक पिक्चर बार में वाला पूछ लिए। हाँ, तो एक एक करके मैं जाता हूँ। तो पहला ये है कि जो आप कैमरे से जो आप फोटो खींचते हो ना, इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। इट्स अ प्रोसेस कॉल्ड रेडियो इंटरफेरोमेट्री। वहाँ पे हम डायरेक्टली फोटो नहीं खींचते, पर हम फूरियर स्पेस पे विजिबिलिटीज मेजर करते हैं, जिसको बोलते हैं मतलब I would request here जैसे you to can you please explain a bit about the Fourier space, because we have been listening about the Fourier space for a very long time जब से image आई है। So people would like to know that what is Fourier space. So if you can explain that for the audience. राइट, हाँ वो करता हूँ। सो आप एक हाँ, आप एक कोई साइन वेव वगैरह कुछ ले लो, ठीक है। इट इज मूविंग इन टाइम एंड लेट्स से इट्स मूविंग इन स्पेस। नाउ if you try to if you want to understand uh, how is it moving in time and space, you do a conversion which is known as a Fourier conversion. It's basically trying to take this wave function as a function of time to a function of space, ठीक है, so that आप spatial components को capture कर सकते हो। So for example, आपको पता होगा कि इवेंट हॉराइजन जो ब्लैक होल पिक्चर्स कैप्चर करने के लिए वी नीडेड अर्थ साइज
telescope, but that's not physically possible, right? So हम क्या कर सकते हैं in interferometry? You can join telescopes together and then form, let's say आप एक telescope इधर है, एक telescope उधर है, एक telescope इधर है. So you join this one with that one. Like यहाँ पे कुछ recording हुआ, यहाँ पे कुछ recording हुआ, यहाँ पे कुछ recording हुआ. तो ये जो distances है ना, ये आपको spatial components देते हैं. And plus it's capturing some image information. So that's why we are using Fourier space, so that you can join all of these different distances together to form an outside telescope. And जैसे ऑप्टिकल टेलीस्कोप में क्या होता है कि आप फोटॉन्स आ रहा है, आप कैप्चर कर लो, यू फॉर्म द पिक्चर देयर एंड दैट्स द पिक्चर. जैसे हबल टेलीस्कोप से जो फोटोज आता है वो वैसा होता है. यहाँ पे द अमाउंट ऑफ फोटॉन्स जो आते हैं इतना कम होते हैं दैट यू नीड टू कंबाइन. एंड सो यूजुअली क्या होता है कि जो जो बहुत बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स होते हैं दे आर यूजुअली कॉल्ड एडेज. जैसे छोटे छोटे टेलीस्कोप्स साइड बाय साइड है काफी, और वहां पे भी जो डिस्टेंस की बात की ना मैंने, तो ये डिस्टेंस का मेजरमेंट कर करके वहां पे इमेज फॉर्म होता है. That's basically what it is. That it gives you spatial information and temporal information, and then you have to take that information and convert it back to an actual image. Even though you're missing some of these spatial distances, so you need to fill up using some of your models. Basically joining the information you are creating a picture. So exactly. Okay, so let's come back to the previous question कि कितना समय जो हमको लगा है और डेटा कब था हमारे पास, कौन से डेटा को हमने प्रोसेस किया है कि हमें ये जो इमेज है वो देखने को मिली, और ये जो गैप था M87 की पिक्चर में और सेजिटेरियस की पिक्चर में, ये गैप क्यों था, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे. राइट. सो पहला जो ऑब्जर्वेशंस पब्लिश्ड हुआ वो 2017 में लिया गया था, एंड उसके बाद भी हम 2018, 2021, 2022 में ऑब्जर्व कर चुके हैं. उसका डेटा प्रोसेसिंग चल रहा है अभी. सो M87 स्टार का क्यों पहले हुआ था, क्योंकि अब ये देखो M87 स्टार का ब्लैक होल मास है और ब्लैक होल टोटल वेट जो है that's around 6 times 10 to the power 9, or 6 billion solar masses, so times the mass of the sun. Sagittarius S star का है around 1,000 or 1,500 times lower, which is around like 4 times 10 to the power 6, 4 million solar masses. So while both are supermassive black holes at the center of galaxies, time, like a ray of light takes a longer time to go around M87 as opposed to a Sagittarius star. So things are more variable. Like the gas, आपको black hole है, black hole के around gas move कर रहे, right? So given the size of, if the black hole size is smaller, then gas can move around faster, right? Around the black hole. Now, if the source is more variable, the gas is more variable, then आपको स्टील पिक्चर लेने में बहुत मुश्किल होगा ना, क्योंकि आप ये सोचो कि एक बंदा पैदल चल रहा है, उसका फोटो लेना बहुत इजी है. जो M87 है जो स्लोली इवॉल्व हो रहा है ओवर टाइम, और आपको एवरी नाइट आप ऑब्जर्वेशन लेके वो चेंज नहीं होगा उतना. और फिर आप एक बंदा जा रहा है सुपर बाइक में, उसका ब्लर्ड इमेज आएगा ना, तो प्रोसेस करना उसको मोर डिफिकल्ट भी है. तो इसीलिए ही हम इमेजिनेशन को पहले प्रोसेस करके उसका that was easier to describe considerably than Sagittarius star, where because it's faster doing the averaging over a single night, that took out a lot of the information, and it provided us with a blurred image. That's why.
So इसीलिए थोड़ा लेट हो गया था हाँ। इसीलिए लेट हो गया अपना ब्लैक होल जरा ज्यादा इस मामले में थोड़ा हाँ, ज्यादा एक्टिविटी है इसलिए। बट एक्टिविटी से एक चीज याद आई कि आई वाज टॉकिंग टू अनदर साइंटिस्ट एंड he said that the black hole that was captured on मतलब जिसके इमेज अभी पब्लिश हुआ है 12 तारीख को, वो that black hole is not that active but जो M87 है वो बहुत ज्यादा एक्टिव था। सो एक्टिविटी है नहीं तो उसका इमेज लेना और भी ज्यादा टफ हो जाता है। एंड फिर जो आपने बताया कि वो जो गैस का मामला है, सो वाज दैट ऑल्सो अ रीजन की एक्टिविटी का जो हाँ प्रॉब्लम था? हाँ, यहाँ पे सो दो कॉन्सेप्ट चल रहा है। एक है कि आप विथ टाइम आपका सिस्टम कितना चेंज हो रहा है, वो सजेस्टर में ज्यादा है। सजेस्टर चेंजेस फास्टर बिकॉज इट इज अ स्मॉलर ब्लैक होल देन M87. नाउ M87 इज अ मोर पावरफुल ब्लैक होल, और रादर द अच्छा, अगर सो कॉन्टेक्स्ट दें जनता को कि कितना जो है फास्ट होता है, तो मैंने शायद पढ़ा था इवेंट होराइजन के उस पे कि वेबसाइट पे ही कि शायद सेजिटेरियस का 1 मिनट में ही पूरा चक्कर लगा लेता है गैस शायद। हाँ, अप्रोक्सीमेटली वही है। आप अगर सजेस्टर का सर्कमफेरेंस लेंगे और आप एक लाइट रे छोड़ देंगे, तो लाइट रे रोटेट करने में आपको मिनट्स टू डेज लगेगा। ठीक है, फॉर M87 इट विल टेक, सॉरी, इसमें मिनट्स लगेगा, M87 में डेज लगेगा एटलीस्ट। सो M87 इज स्टेबल, और आप अगर पिक्चर लेते हो देन इट वोंट चेंज दैट मच फ्रॉम डे टू डे, whereas Sagesta changes from minute to minute. इतना फास्ट चेंज होता है उसमें। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो आप रिसर्चर के साथ बात किया था, दैट पर्सन इज आल्सो राइट इन द सेंस कि um, देखो, ब्लैक होल है, ब्लैक होल कुछ खा रहा है, ठीक है, गैस वगैरह खा रहा है। नाउ आप डिटरमिन कर सकते हैं कि कितना अमाउंट खा रहा है एज अ फंक्शन, एज अ रेशियो ऑफ इट्स ओन मास। ठीक है, तो आप लेट्स से आप 1 किलोग्राम बॉल है, 1 किलोग्राम का ब्लैक होल है लेट्स सपोज, और 1 ग्राम खा रहा है। ठीक है, तो आप बोले कि इस ईटिंग 1 ग्राम ओवर 1 किलोग्राम ऑफ इट्स वेट, एंड देन आप ये स्केल अप कर सकते हैं। तो उस हिसाब से Sagestar is like eating something like, if it were a human, it would eat like 1 grain of rice every, I think it was every million years or something. So काफी starved है in that sense that it doesn't eat a lot of gas, and so activity जो भी होता है is fast, but it's not a lot. तो छोटा मोटा कुछ करता रहता है वो। M87 उससे काफी ज्यादा अमाउंट खाते हैं as with respect to its weight. It's a bigger black hole, so it is eating a lot more. और M87 में हम ये भी देख सकते हैं कि एक बड़ा सा एक रिलेटिविस्टिक जेट है। जेट is something which is अब It is ये something releasing which is flowing something. outside. Hmm. Yeah, so you have gas coming in, but there's also gas going out, and that this gas is moving at around uh, velocities which is very close to the velocity of light. And because you see that, you already know that it's a much more powerful uh, source or powerful black hole as compared to Sagittarius, which you don't really see anything that much, like you don't really see a jet or something like that. And there are like small fluctuations in the signals that you receive from day to day, but there are fluctuations in that sense. बस छोटा मोटा कुछ होता रहता है वहां पे कुछ चलता रहता है उधर। कुछ, हाँ अच्छा, अब एक सबसे बड़े क्वेश्चन पे आते हैं which has been asked for many days कि what is the significance and what is the importance of this image? ये image हमको बता क्या रही है?
और ब्लैक होल की ये जो दो इमेज आई हैं, इससे हमें आगे क्या एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए कि रिसर्च में हमें किस तरह से फायदा होगा, या क्या हम आगे इससे बढ़ेंगे? Hmm. So usually, apart from the just the sheer joy of having a scientific result, um, ये scientific result achieve करने के लिए you develop a whole lot of machinery, right? And it also helps in building up your in testing your theoretical models. So, for example, at least for इस एज स्टार काम के वजह से हमको पता चला कि हमारा जो बेसिक थियोरेटिकल मॉडल्स है वो गलत है, क्योंकि देवर वहाँ पे कुछ सजेस्टार में कुछ चलता रहता है पर हमारे मॉडल्स में और भी ज्यादा चलता रहता है, जैसे देयर आर मोर वेरिएबल एंड तो हमको पता चला कि एटलीस्ट वहाँ पे कुछ काम करना होगा हम लोग को. And just from the for the scientific community in general, if you push your instruments, you push your techniques to the limit, usually something comes out of it that can be used in another section of your of the field. And for like the world in general, I think that it's just a feat, like a testament to human ingenuity and what people can do. Just using resources on the earth, like if people from so many different places can put their minds together, work and bring out a result like that, I mean, it gives me hope, at least for like collaboration around the world, even in times like even in these trying times. Yeah, it's just an inspiring, like I feel so inspired to have worked with so many different people from around the globe. And it gives me an opportunity to interact with so many people personally, which is all obviously excellent. Nice, nice. So what is the next expectation? Like what can we expect the next? What is the next project? Are we going to like, अभी अर्थ को हमने एक टेलीस्कोप बनाया है, क्या अर्थ के ऑर्बिट को एक टेलीस्कोप बनाने का कोई प्लान चल रहा है, या फिर पूरे सोलर सिस्टम को एक टेलीस्कोप बनाने का कोई प्लान, क्या कुछ ऐसा चल रहा है, या फिर अगला आपका प्लान Mhm. है क्या एग्जैक्ट? So एक तो अभी जो ऑलरेडी in motion है plan, is adding more and more telescopes to the Event Horizon Telescope set. हम In 2017, we had 8 telescopes. Um, I think we added one more in 2018, and then two more at least in like two more telescopes in 2022, like this year, and maybe also 2021. Don't exactly remember. So एक तो वहाँ पे काम चल रहा है कि you add in more and more um, radio telescopes around the world to make your image a bit more sharper. तो Fourier space हम फील करने की बात कर रहे थे ना, जो हमको ये जो डिस्टेंस वाला सीन, तो ये as you add more and more telescopes, you get more and more of these distances, like connections between different telescopes, and that helps you to make a sharper image. तो वो तो एक है ही. एक है अभी जो फॉर्मेशन चल रहा है नेक्स्ट जनरेशन इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप का, वहाँ पे यू एड इन लाइक ऑलमोस्ट 10 मोर telescopes, 10 to 13 more telescopes, and that will like that will take that will give you very lot of different benefits. One, it will create a sharper image, sharp sharper with respect to like what we have now. Number two, it will try to join the like आप देखे जो आप ब्लैक होल देखे थे, that's like really close to the black hole. और एमआईटी से हमको पता है कि there is a jet there, right? So the objective will be to take the region around the black hole and also capture the jet together, so that we figure out what's going on near the black hole and then how is it translating to the jet. Um, ये तो एक example हुआ, and then there are so many other black holes that are worth observing, even though we can't see
maybe can't see like horizon, like वो black hole shadow तो नहीं देख सकते, but at least jets वगैरह ये study कर सकते हैं. um, right, and after that जो अभी concept study चल रहा है is, like you said, is putting a telescope in space so that, or on the moon or something. Like we are testing out different models where you increase, take a telescope and like chuck it into space somewhere, uh, either in near Earth orbit, far or Earth orbit, or near to the moon, or even closer to, like even further than that, and then see how what the benefits of that are. Like if you have very long baselines, then you can resolve smaller spatial scales. तो उसके मतलब वही इमेज शार्पर हो जाएगा. um, पर वही कि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होगा वो काफी काफी तगड़ा होगा, let's say. And the amount already data transfer को जो total data stored होता है, that's like of the order of petabyte scale. और तब क्या होगा मुझे पता, आई डोंट, अंदाजा भी नहीं है कि तब क्या होगा एग्जैक्टली, और कैसे डेटा ट्रांसफर करेंगे. पर ये सब चीज अभी चल रहा है, ऑनगोइंग डिस्कशंस एंड ऑल. वो चीज सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है एक तो मेरे को, और दूसरी चीज ये लगती है कि जो कंपैरिजन होता है ना हमारी हार्ड डिस्क से और उस डेटा का, कि मतलब अगर 1% के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी अगर हमने हार्ड डिस्क लगाया, हार्ड डिस्क जाए. इतना बड़े अमाउंट का हाँ, डेटा है वो. लाइक सीरियस, मतलब मैं जो थ्योरेटिकल मॉडल्स करता हूँ वहाँ पे भी काफी डेटा जनरेशन होता है. बट ये जब अमाउंट सुना था, जब वो जो हार्ड डिस्क का बंच जब देखा था, मेरा तो दिमाग फट गया था उस टाइम पे कि ठीक है, इट्स फाइन. मुझे नहीं देखना है इतना. इसलिए बहुत टाइम लगता है डेटा को रिड्यूस करने में. और यहाँ जो एक एक साइट में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए थे वो कोरिलेट करने में, एंड देन एक कोहेरेंट इमेज फॉर्म करने में, ओके इसलिए सो काफी टाइम लगता है. सो आफ्टर मे बी अ क्वांटम कंप्यूटर, क्योंकि अभी हम्म. हम लोग सुपर कंप्यूटर्स की एरा में जी रहे हैं शायद. तो क्वांटम कंप्यूटर्स का जब स्टेज आएगा, सो विल देयर बी अ चेंज इन द लाइक द टाइम बिटवीन द टू इमेजेस, और जो डेटा प्रोसेसिंग है क्या वो फास्ट हो जाएगा तब? और एक फास्ट प्रोसेसिंग कितना ज्यादा मैटर करती है इस चीज के लिए? आई थिंक इज मोर देन फास्ट प्रोसेसिंग. आपको दो डिफरेंट टाइप डेटा का डेटा सेट मिल रहा है ना. एक जैसे आप बोले थे कि आप एक per if you take continuous video of a person walking and then try to make a still image of that, it's much easier because the picture doesn't change that much over time. So आपका, और जो सुपर बाइक का एग्जांपल मैंने दिया था वहाँ पे काफी चेंज हो रहा है. हम्म. So even though you can have a lot of processing power, the main problem becomes like how do you treat the two data sets. एक में बहुत स्लो पेस चीज हो रहा है, एक में बहुत फास्ट पेस है. And for that we needed to develop a lot of new algorithms to actually understand what's going on. And वहाँ पे काफी टाइम गया था, क्योंकि if you go ahead and treat the suggested image the same as what you did with M87, you just get a blurred image out of it. You don't get something coherent. And so uh, the people who worked on the image, like that's why they took such a long time. Like they tested what if we do this, what will happen? If we do that, what will happen? If we make a change in our construction codes, would that make things better or not? I think that was the main bottleneck rather than processing power. क्योंकि uh, like there were different teams doing it, and so they use different pools of resources, like different supercomputers use हुए थे. I'm
I don't remember them complaining about not getting enough time on supercomputer. It's just they had a hard time dealing with the data. But as the supercomputing resources grow and grow, the time it takes to obtain um, results might go smaller and smaller, just because you can push more demanding algorithms through the supercomputer. जैसे आप brute force और भी लगा सकते हैं, like more, you can do more calculations and they won't be prohibitively slow. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ब्लैक होल की मॉडलिंग के बारे में आपने बताया कि आप ब्लैक होल के मॉडल्स बनाते हैं. सो काफी फैसिनेटिंग सी बात लगती है. मतलब मॉडल्स हम भी बनाते हैं बट उन पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि हम इतना ज्यादा उस पर रिसर्च नहीं किए. तो आप जो ब्लैक होल के मॉडल्स बनाते हैं, सबसे पहली बात हमें ये बताइए कि इसका प्रोसेस क्या रहता है, क्या क्या चीजें जो हैं, क्या क्या थ्योरीज जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है टू मेक अ मॉडल. एंड मॉडल बनाने के भी क्या कुछ उसूल होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, क्या कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स होते हैं? सो उसके बारे में हमें बताइए. राइट. और तो एक एक और क्वेश्चन कि एक चीज जो नहीं है, जो मतलब नहीं दिखती हमको, नहीं है मतलब कि नहीं दिखती, मतलब सूरज हमें दिखता है, चांद तारे हमें दिखते हैं, बट ब्लैक होल हमें नहीं दिखता, उसका मॉडल बनाना, हाउ ट्रिकी इज दैट? राइट. सो तीन चीज जाते हैं. देयर आर थ्री थिंग्स दैट गोज इनटू द मॉडल्स. एक है जनरल रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने दिया था, तो उसका जो इक्वेशन का फॉर्मूलेशन है वो दैट्स इनसाइड द मॉडल. दूसरा चीज है, आप हम बोले थे कि द ब्लैक होल इज डिस्क्राइब्ड बाय आइंस्टाइन्स इक्वेशंस, बट देयर इज आल्सो गैस अराउंड इट, राइट? कुछ फ्लूइड, कुछ होता रहता है फ्लूइड्स लेके. तो दैट इज गिवन बाय फ्लूइड डायनामिक्स, जो हम यूजुअली ग्रेजुएट स्कूल में और ग्रेजुएट के अंडर ग्रेजुएट में ही पढ़ते हैं. एडिशनल कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये जो फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स के साथ मैग्नेटिक फील्ड्स भी है. ठीक है. सो यू ये तीन एस्पेक्ट लेके यू फॉर्मुलेट अ सेट ऑफ इक्वेशंस व्हिच आर नोन एज जनरल रिलेटिविस्टिक मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक इक्वेशंस बोलते हैं. अब आपको इक्वेशन सेट आपको मालूम है. अब इस नेक्स्ट द नेक्स्ट थिंग इज टू फाइंड अ वे टू सॉल्व देम. वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट द यूजुअल वे इज लाइक यू यू फर्स्ट सेट अप योर, लाइक आप बोल लेते हैं कि ये ब्लैक होल है. ठीक है. इनिशियल कंडीशन ये है, ये ब्लैक होल है, ये इतना अमाउंट से स्पिन कर रहा है, गैस इधर पे है और गैस में इतना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये ओरिएंटेशन इसे आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो उधर. पर एक जनरल केस लेके आप स्टार्ट करो. ठीक है. और यूजुअली क्या होता है कि आप ब्लैक होल सेंटर में और एक डोनट ऑफ गैस सराउंड करता है which is in hydrostatic equilibrium according to the equations. This is what you feed into the numerical model. और फिर आप टाइम ऑन करते हैं. तो विद टाइम क्या होता है, जो गैस, जो डोनर गैस था, वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड बिकॉज ऑफ सम स्मॉल फ्लक्चुएशंस विद इन द गैस, वो थोड़ा थोड़ा करके अंदर आता है. और फिर यू हैव द प्रोसेस व्हिच इज नोन एज एक्रीशन. जो हम बोले थे कि गैस खाड़ है, उसको एक्रीशन बोलते हैं. और क्योंकि आपका ब्लैक होल स्पिन कर रहा है, तो इट आल्सो स्पिन्स अप द गैस. नाउ आपका मैग्नेटिक फील्ड्स भी है ना गैस के साथ, वो भी आ रहा है धीरे धीरे करके. नाउ मैग्नेटिक फील्ड्स का प्रॉपर्टी ये अच्छा है कि इट कैन बी स्पन अप बाय द ब्लैक होल. ठीक है. तो आप ऐसा सोच सकते हो कि ब्लैक होल ऐसा है, एक लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आया ऐसा करके, और फिर बीच वाला पार्ट स्पन अप हो गया. तो जैसे आप एक स्प्रिंग लेते हो ना, एक स्प्रिंग लेके आप ट्विस्ट करते रहते हो, तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है ना.
तो सेम चीज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, प्रेशर बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, और अल्टीमेटली एक बड़ा एक्सप्लोशन से आपका जेट निकलता है. That is that's what the theoretical model says. Now this is the basic setup. आप थोड़ा बहुत इधर उधर ब्लैक होल का स्पिन जो रोटेट कर रहे हैं वो स्पिन का अमाउंट चेंज कर सकते हैं, गैस क्या कर रहे हैं वो चेंज कर सकते हैं. पर दैट्स नॉट द होल स्टोरी. आपका ये तो मॉडल आ गया गैस का. आप आपको नेक्स्ट डिफाइन करना होगा कि हम गैस तो है पर ये तो आपको दिखेगा नहीं यूजुअली, एटलीस्ट ऐसे नहीं दिखेगा. तो यू कैलकुलेट कि पिक्चर क्या होगा इससे. तो दैट्स द सेकंड स्टेप. और उसके लिए आप वो वही सेम आइंस्टाइन इक्वेशंस यूज करते हो एंड यू यूज सम प्रॉपर्टी ऑफ द गैस. तो आप क्वेश्चन पूछे थे ना कि ब्लैक होल जो चीज दिखता नहीं है वो कैसे हम देखते हैं. हम ब्लैक होल के एक्चुअली देखते नहीं है, स्पीकिंग लाइक ट्रूली स्पीकिंग. हम देखते हैं जो जो गैस सराउंड करते हैं ब्लैक होल को, द वे इज चेंजिंग, दैट इज प्रोवाइडिंग अस विद लाइट. तो इसीलिए आपको पिक्चर अगर याद होगा तो एक रिंग टाइप का पिक्चर है, बीच में अंधेरा ब्लैक है बेसिकली. ब्लैक है। हाँ. तो हम इसलिए सोचते हैं कि बीच में ब्लैक है क्योंकि वहां पे जो फोटॉन्स थे, जो गैस थे जिसमें फोटॉन्स निकल के आया था, वो हमको रीच करके they couldn't reach us, they fell into the black hole. That's why that part is dark. तो साइड में जो है that part is, वहां पे जो गैस था वहां से जो फोटोन्स निकल के बाहर आया they could reach us. और यही कैलकुलेशन हम वो सेकेंड प्रोसेस में करते हैं. तो आपको पता ही होगा कि हाँ, ये जो सिस्टम है ये किस एंगल से देख रहा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा इमेज. क्योंकि ब्लैक होल जैसे गैस आकर ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल ऐसे रोटेट कर, गैस भी ऐसे रोटेट कर रहे हैं. तो हम इधर से देखते हैं, इधर से देखते हैं, इधर से देखते हैं, नीचे से देखते हैं, इसके हिसाब से इमेज चेंज होता है. ये सब चीज ही हम मतलब मॉडल करके देखते हैं कि सबसे अच्छा फिट कौन सा होगा और देखने में सबसे क्लोज कौन सा होगा. I think that's generally the gist of it. Like you take different aspects of the models and change them, and you try and make your model as close to the black hole picture जो आप देखे थे उसका करीब मतलब it you try your best to match them up by using some sort of scoring method, or then you can describe कि हाँ सजेस्टर में मोस्ट लाइकली ये कंडीशन चल रहा है और गैस जो है वो ये सब चीज कर रहा है. आपको एक जनरल आइडिया मिल जाता है. एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं मिलेगा क्योंकि there's always some errors, पर that's basically मेरा काम था, एटलीस्ट मैं जो टीम में था उसका काम था यही करना, ये मॉडल सेट बनाना, ये इमेजेस, ये पिक्चर्स, डिफरेंट पिक्चर्स बनाना और देखना कि ये अच्छा है ये वो अच्छा है, ऐसे ऐसे. नाइस नाइस। अच्छा, एक सवाल फिर यहाँ पर ये भी आता है कि ये तो बात हो गई ब्लैक होल के बाहर की इमेज, क्या कोई मतलब ऐसे लोग भी क्या एग्जिस्ट करते हैं जो ब्लैक होल के अंदर क्या है उसका मॉडल बनाने के साइंटिफिकली, मतलब उसका मॉडल जो है वो बनाने के लिए बैठे हैं, मतलब कि जो सोच रहे हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या चीजें होंगी, क्या ऐसे भी लोग, या क्या आप उनमें से एक हो? इसके बारे में बताइए। वेल पर्सनली मैं अंदर का मैं देखता हूँ कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके लेके, ये लेके मेरे ज्यादा दिलचस्प है मुझे. सो इशू क्या है कि ब्लैक होल के अंदर जो हो रहा है वी कांट सी इट फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज देयर इज नो सिग्नल गोइंग आउटसाइड. हाउएवर इट लाइक ब्लैक होल का जो इवेंट हॉरिजन है उसके बाउंड्री में क्या चल रहा है, जैसे क्वांटम इफेक्ट्स चल रहा है कि नहीं, ये लेके स्टडी करते हैं डेफिनेटली. एंड सिंस a black hole is a representation of extreme gravity, जो आप यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन आपको एक पॉइंट होता है
ब्लैक होल सोल्यूशन में जहाँ पे सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है. सो व्हाट इज बियॉन्ड दैट, वहाँ पे फिजिक्स ब्रेक क्यों हो जाता है, ये स्टडी भी लोग करते हैं. um, the issue is there is no direct consequences of that to the image that we see, just because वही जो मैंने बोला कि सिग्नल बाहर नहीं आता है, but it could give, like it could have consequences for the morphology of the black hole. It's like black hole कैसे दिखता है in the physical sense, उसके लिए तो it can have consequences, and especially what's going on, like वो event horizon के edge में क्या चल रहा है exactly, वहाँ पे हो सकता है consequences, but वही कि it's very difficult to do this type of science, and people try to like prediction करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये specific model होगा और हमको if we assume that this is what's going on inside the black hole, these are the things that can have an effect on the surface of the black hole. Just for example, Hawking radiation, ये सब चीज वही कैटेगरी फिजिक्स से आया है. सो थैंक यू वेरी मच सर, ये सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए, ये सारी चीजें हमें बताने के लिए. और काफी मजा आया इस कॉन्वर्सेशन में, और आई होप कि लोगों के काफी सारे डाउट्स जो है वो अब क्लैरिफाई हुए. और इसके बाद जब मैं आपसे बात करूंगा, सो होपफुली तब फेस टू फेस बात हो और एक कैमरा के एक ही तरफ बैठे हो. और मैं जानना चाहूंगा तब कि भाई इतने बड़े प्रोजेक्ट में आप पहुंचे कैसे, इसका पार्ट बने कैसे, और इतनी सारी बातचीत जो है वो कैसे हुई. सो ये सारी चीजें जो है अभी के लिए मैं यहाँ पर इनको जनता के लिए अभी छोड़ूंगा कि किस तरह से ये सारी चीजें हुई. और नेक्स्ट टाइम और भी कई सारे सवालों के साथ जो है वो आपसे जुड़ना चाहूंगा और आपका टाइम जो है वो दोबारा से लेना चाहूंगा. थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग. Thank you for having me.